Now we come to the last portion of the non-chordates in the Animalia, and that is Hemichordata. Hemi means what? Half. Half chordata or half chordates means these are not true chordates, and they are acting as the link between the non-chordates and chordates के बीच का link करते हैं. So Hemichordata, now it should be clear कि Diplurula larval stage, Diplurula larva का क्या मानते हैं? It is the ancestral form for किसके लिए? For the echinoderms, for the hemichordates and chordates. तो तीनों का क्या मानते हैं इसको? Common ancestor. So now we'll be discussing the Hemichordata. Hemichordata present in the coastal areas, and there it's making U-shaped burrow. Burrow formation करता है, कैसा रहेगा? U-shaped burrow formation करेगा. The body form will say body divisible into three parts. Body में तीन parts distinct रहेंगे. आगे के साइड में this is proboscis part, then this portion, this is collar part, then this portion is the trunk part. तो proboscis, collar and trunk ये parts रहेंगे इसके साथ. Symmetry of course bilateral. Organ system, ये सब नॉर्मल वही चल रहे करेक्टर्स. Triploblastic, that will be there. Coelom, of course coelom is present. Coelom is enterocoelous type, वो जो अभी बात कर रहे थे, by outgrowth from the antron, chordate feature जो रहता है. तो enterocoelous coelom, but coelom is present as 5 compartments, or we can say there are 5 chambers. One will be in the proboscis, 2 in the collar, and 2 in the trunk part. So coelom has got 5 chambers with it. So enterocoelous, and it is divided into 5 chambers there. Next is regarding digestion. So for digestion we'll say these are filter feeder. These are filter feeder, यानी कि बॉडी में क्या आएगा? वाटर एंटर करेगा, और वाटर में से क्या होगा? द फूड में क्या रहेंगे? मेनली प्लैंकटॉन्स वगैरह. तो दीज गेट फिल्टर्ड, वो उसमें से फिल्टर हो जाएंगे उसके साथ में. तो डाइजेशन क्या नेचर हो गया इनका? दीज आर फिल्टर फीडर. शुड बी क्लियर कि फ्रॉम रूफ ऑफ द बकल कैविटी, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, ऑफ कोर्स दे हैव द कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल. So from the roof of the buccal cavity, suppose if I say that's the buccal cavity portion, so from the roof of the buccal cavity arises a blind projection. This projection is ending blindly, and this projection is called buccal
diverticulum or stomochord, and will be present where? Proboscis. तो stomochord is present in the proboscis part. ये proboscis part में present है, and that is considered equivalent to the notochord, but it is not a notochord. Notochord है नहीं. That's why it is not a true chordate. Clear? तो इसमें क्या present है? Stomochord is present. Next comes the respiration. For respiration, they have the gill slits. रेस्पिरेशन के लिए क्या कहेंगे? क्या प्रेजेंट है? गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, लेकिन ये जो गिल स्लिट्स हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड. देखो, किसी भी कॉर्डेट में जब गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड. बट यहां पे ये जो पोर्शन है ट्रंक का, इस पोर्शन के साथ क्या प्रेजेंट होंगे? गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट and these are present on the dorsal side. So it is not a complete chordate character, because for chordate character that has to be on the lateral side. उसको lateral side में होना था. Next, circulation. Circulation is open type of circulation, or the blood coming in direct contact with the body parts. So it is open type of circulation, and should be clear, we'll be having with the one dorsal blood vessel and one ventral blood vessel. तो एक इसमें ऊपर की साइड में dorsal और नीचे एक क्या प्रेजेंट होगा? ventral blood vessels are present. Next is excretion. For excretion, they have the proboscis gland or that we call as the glomerulus part, and will be present in proboscis. Proboscis के अंदर present होगा. Next is nervous system. Nervous system will say it is having epidermal nerve plexus. It is having epidermal nerve plexus, यानी कि एपिडर्मिस के साथ साथ क्या बना होगा? इसके अंदर नेटवर्क बना हुआ है. So it is having with it epidermal nerve plexus, and this nerve plexus is having two thickenings. One thickening on the dorsal side and one thickening on the ventral side, and these thickenings can be compared to the notochord. इसको इसके notochord के equivalent मान सकते हैं. So these thickenings can be concerned, that can be taken equivalent to the nerve cord part, but exactly nerve cord नहीं है. So these thickenings can be considered equivalent to the nerve cord, right? So that's the nervous part. Next is reproduction. Hermaphrodite. गोनैड्स डेवलप करते हैं कहां पे? हेयर ऑन द लेटरल साइड, ऑन द लेटरल साइड ऑफ द ट्रंक. तो इस साइड से क्या आ जाएंगे? इसके अंदर गोनैड्स डेवलप कर जाएंगे. तो ये जो गोनैड्स वाला पोर्शन डेवलप हो गया, ये पोर्शन क्या बन गया? दिस इज द जेनाइटल विंग. ये पोर्शन क्या हो गया? जेनाइटल विंग पार्ट हो गया. और जो गोनैड्स डेवलप हो गए और यहां पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, फॉर दैट रीजन हम कह सकते हैं कि इसके ट्रंक के दो पार्ट्स हो गए. ट्रंक में ऊपर का पोर्शन, ये वाला पोर्शन,
This portion will be called branchiogenital part. नीचे का पोर्शन कौन सा हो जाएगा? एब्डोमेन. तो ऊपर का पार्ट हो गया ब्रेंक्योजेनिटल, नीचे का पार्ट क्या हो जाएगा? एब्डोमेन पार्ट हो जाएगा इसके साथ. सो दैट विल बी विद द रिप्रोडक्शन में. बाकी इसमें फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी एंड द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब लार्वा. तो हेमिकोडेटा में कौन सा लार्वा प्रेजेंट है? टॉर्नेरिया लार्वा इज प्रेजेंट. और इसमें लार्वा जो रहेगा, लार्वा कौन सा रहेगा? दैट्स अ टॉर्नेरिया लार्वा. और लास्ट में लेते हैं इसका एग्जांपल. हेमिकोडेटा में बैलेनोग्लॉसस, that's called as the tongue worm. Then we have saccoglossus. So बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, these can be taken as the examples. ये इनके examples ले सकते हैं. So that's with the phylum Hemichordata. Hemichordata, of course, it is included with the non-chordates. लेकिन कई बार इसको हेमिकोडेटा को सेपरेटली कोडेटा में भी इंक्लूड किया होता है. बट एक्चुअली इट इज प्लेस्ड अंडर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर. तो इट इज एक्चुअली लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स. तो दैट्स विद द हेमिकोडेटा. एंड विद द हेमिकोडेटा द नॉन कॉर्डेट्स पार्ट दैट इज नाउ कंप्लीट. मीन्स नॉन कॉर्डेटा पार्ट जो है ये सारा अब कंप्लीट हो गया. एनिमेलिया में दो पार्ट्स आते थे. One that's a non-chordate, second is the chordate. The non-chordate part that has been completed. Baki in the next lectures you will be studying the chordata part. Is it clear? Thank you.